Namaste everyone. Today is नमस्कार सभी को नमस्ते। today is October 30th, and we are now going to start our session on Sandhya Upaasanaa and Mantra Swadhyaya. So I am going to invite Dr. Om Gandhiji to start the Sandhya session today. Let me spotlight him. Dr. Gandhiji, आप please start कर दिए जब भी आप चाहें. नमस्ते सबको. Before I start the Sandhya, I want to say a few words about the postures. It is a repeat for some people, and for some people it might be new because they might not have been present in the last session. So if you're sitting on the floor in Sukhasana or Padmasana, put a small cushion under your buttocks, only the back part of the buttocks, not the whole buttocks. But that will change the angle of the lumbar spine and the pelvis to 95 degrees from 90 degrees. So with that, you can sit comfortably for a long period of time. Or if you are sitting on the chair, make sure that your back does not touch the back of the chair seat. Preferably, you should get the chair without the armrest. And your feet should be flat on the floor. And your knees should be at the same level as your hip joints or slightly higher. That will relax your back muscles. And again, you will be able to sit comfortably for a longer period of time. And the hands in Yoga Mudra, which is this one, the thumb represents the Paramatma, index finger Atma, and these three fingers, the three properties of the Prakriti, that is the Sattva, Rajas, and Tamas. So this is the Yoga Mudra, and the hand should be on the knees and in the Yoga Mudra. So sit tall and make yourself comfortable there so you don't have to move during the Sandhya, which takes about 10-12 minutes, so you should be able to sit comfortably. Close your eyes and concentrate on the third eye. And we'll repeat Om 3 times. Take a deep breath and start. Om. 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 Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanno Devir Abhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyor Abhis Sarvantuna. Om Vak Vak, Om Prana Prana, Om Chakshus Chakshuhu, Om Shrotram Shrotram, Om Nabhihi
ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ कर्तलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वाहा पुनातु कण्ठे ॐ महा पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनशिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ महः ॐ जनाः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सतं चाभिदा तपसो अद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रा धर्णवः दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्यं चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्सर्वन्तु नः ॐ प्राची दिग्अग्निरधिपतिः रसितो रक्षिता आदित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणा दिगिन्द्रो धिपति त्रिशिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचि दिग्वरुणो धिपतिः पर्दाकु रक्षिता आनम् ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ उदीचि दिक्सोमो धिपतिः सव्जो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः
ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षम् ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ उद्वयं तामसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उद्यतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवा नामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्याय आत्मा जगतः स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताशुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतम् अदीनः श्याम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनः श्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवे नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ शान्तिः 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 Rub your hands and generate energy. Cup your face and transfer the energy to the 5 sense organs. ईश्वर का धन्यवाद करते हुए स्लोली आंखें खोलिए. नमस्ते. थैंक यू. Thank you, Dr. Gandhi.
So today, can everybody see the screen? Yes? Okay, Yes, you can see. thank you. So today my topic is Dan, and I have selected two mantras from Rig Veda, and this is the Suktam. Rig Veda Mandal 10, Sukt 117. इस सूक्त में दान का महत्व बताया गया है। जिसको दान दिया जा रहा है, अगर उसमें पात्रता है तो उसे दान अवश्य देना चाहिए। दान देने से धन क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अपितु परमात्मा की प्राप्ति इस सूक्त में कही गई है। सो वी विल सी दैट टुडे। I have selected two mantras, but there are 9 mantras in this. So when I get a chance next time, so I will go over the other ones. Today I'm going to cover only two. Uh, it is your responsibility to find out if the person or the organization that is receiving your दान is worthy of your दान or not. उसमें पात्रता है कि नहीं है। अगर पात्रता है तो उसको दान देना चाहिए, अगर पात्रता नहीं है तो उनको दान, दोनों को, ना इंडिविजुअल को और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे दान देना चाहिए, क्योंकि वो आपका दान जो है ना फिर वो नष्ट ही हो जाता है। So the first mantra is like this, says na va u devaha kshuda mid vadham dadu ruta shit mupa gachanti mrityevaha uto rahi pinato nope. This word is a long word. I have broken it into 4 different parts. Dasyati ut aprinanam marditaram na vindate. जो इस मंत्र का, so we'll go over these words that are coming over here. The rishi of this mantra is Bhikshu, and the devta is धनानंद दान प्रशंसा। इफ इसका पदच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा धन अन्न दान प्रशंसा। दैट इज द देवता ऑफ दिस मंत्र। देवता मीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस मंत्र। तो इसी मंत्र का जब हम पद पाठ करते हैं तो वो बन जाता है ना वै उ इति देवः देवः क्षुदम इत वधम दधु उत आशितम उप गच्छन्ति मृत्यव उतो इत रयि पिणता न उप दस्यति उत अप्रेरणा मडितारम न विन्दते। So that is the padched of these various words, and becomes easier to sometimes from the padched, to find out how this mantra translates into simple language. There are 3 words in this one. One is gachanti, the other one is dasyati, and other is vindate. And we will go over the meaning of these as they come along. Our first sentence is Devaha Kshudam It Vadham Na U Daduhu Ut Ashitam Ut Mrityevaha Upgachanti. So ये गच्छन्ति इसमें आ रहा है अब. This is the verb. This is our. I'm going a little slow because there are people who are jotting it down. So please, I will go over the words. Some of these words you already know it, and the other ones I will just explain a little bit about them. Devha, we already know that. देवो धनाद्वा, जो देता है वो देव है। तो विद्वान लोग भी, इसका हमने अर्थ किया विद्वान लोग। और उसका है शुद्धम इत। शुद्धम मीन्स भूख।
और वधम वधम माने वध करना, मृत्यु नहीं मानते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसमें और भी वर्ड है। आई एम मिसिंग अ स्लाइड हियर। ये दिस इज स्लाइड। तो कह रहा है कि जो विद्वान लोग हैं वो केवल भूख को ही मृत्यु नहीं मानते हैं। इट बिकम मोर क्लियर व्हेन वी गो फर्दर डाउन। अपितु आशितम, आशितम इज derived from ash धातु, अश भोजने, and it's called ashitam over here. A plus ashitam, that's the word ashitam. भोजन खाने वाले को भी मृत्यवह, मृत्यवह ये मृत्यु का जो है ना, ये प्लूरल है, मृत्यु मृत्यवह, मृत्युएं प्राप्त होती हैं। गच्छन्ति, गच्छन्ति इज डिराइव फ्रॉम गम धातु, विच मीन्स इसका अर्थ होता है जाना। और गति अर्थ, तो गति के भी तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ मैंने अर्थ लिया प्राप्त। तो कहते हैं कि भोजन खाने वाले को भी मृत्यु प्राप्त होती हैं। और सेकंड सेंटेंस इज उत परिणतः रही ना उपदस्यति। दिस इज आवर सेकंड सेंटेंस, ये छोटा है। उत मीन्स और, परिणतः, परिणतः दान देने वाले का, रही, रही वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स, रही वयम वयम श्याम पतयो रही नाम, वो आता है ना, उसमें भी रही, रही, रही शब्द उसमें भी आता है। उसमें रही, रही मीन्स धन। ना उपदस्यति, दस्यति मीन्स नष्ट होना। तो दस, दस्यति इज डिराइव फ्रॉम धातु दस, जिसका अर्थ होता है नष्ट होना। तो इसका मतलब हो गया, और दान देने वाले का धन नष्ट नहीं होता है, ना ओवर हियर, दैट मीन्स नहीं होता है। और थर्ड सेंटेंस इज उत आपनना मर्डितारम ना विंदते। उत मीन्स और, आपिनन, आपिनन मीन्स दान ना देने वाला। मर्डितारम, जो मर्डितारम है, इट इज फॉर्म फ्रॉम धातु मृड, मृड सुखने। तो उससे जब त्रिच प्रत्यय करते हैं, देन इट बिकम्स मर्डितारम। This we have done in the Vyakran class. We have done the not Marditaram, we have done Patita. Pat प्लस त्रिच प्रत्यय, उससे हमने किया था क्लास में, व्याकरण की क्लास में। तो उसमें पटिता बना था। तो फिर हम मडितारम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, सो मडितारम। इसी तरह जो हु धातु है, उससे जब त्रिच प्रत्यय करते हैं, देन इट बिकम्स होतारम। जो होतारम जो वर्ड आता है, होतारम रत्न धात्मम, वो जो ऋग्वेद के पहले मंत्र में आता है, होतारम रत्न धात्मम, वहां उसका अर्थ किया हुआ है महर्षि ने, सुख का दाता। तो यहाँ पर है मर्डितारम मीन्स उस सुख को देने वाले प्रभु को। ये एक्यूजेटिव द्वितीय विभक्ति है, मर्डितारम। ना विंदते, ना विंदते मीन्स प्राप्त नहीं करता है। विंदते इज फॉर्म फ्रॉम विद धातु। विद के भी चार पांच पांच अर्थ होते हैं। विद के, विद ज्ञाने भी होता है, विद से ही वेद बनता है, जो शब्द वेद है। और विद से विचारने शब्द, विचारने भी होता है। इसमें हम दिया मैंने अर्थ, विद लाभे, लाभे मीन्स प्राप्त करना। तो ना विंदते मीन्स वो प्राप्त नहीं करता है। तो इसका अब अर्थ पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा, विद्वान लोग केवल भूख को ही मृत्यु नहीं मानते हैं, और दान देने वाले का धन नष्ट नहीं होता है, और दान ना देने वाला उस सुख को देने वाले, उस सुख में प्रभु को प्राप्त नहीं करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड मीनिंग ऑफ दिस मंत्र। तो अब इसका थोड़ा सा व्याख्या कर दूंगा, ज्यादा तो नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट टू कवर द सेकंड सेंटेंस आल्सो। वी हैव टाइम फॉर द सेकंड मंत्र आल्सो। दिस वी हैव फाउंड, दो दिस दोहा आल्सो बाय संत कबीर जी, जिसे चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। एंड द सेम थिंग इज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय तुलसीदास जी। तुलसीदास जी सेइंग, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर।
तो ये भावार्थ में लिख रहा हूँ, अब इससे मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मंत्र का। कहता है कि क्या केवल भूखा ही मरता है? अन्न के भाव से ऐसी बात नहीं है। मृत्यु उन्हें भी आती है जो जो अन्न को अधिक खाते हैं। अन्न के अधिक खाने वाले रोगी होकर मरते हैं। जो दान देता है उसका धन कम नहीं होता है, बल्कि अवसर आने पर और अधिक धन मिल जाता है। जो दान नहीं देता है उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ट्राइंग टू से, इफ यू, जो दान नहीं देता है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। And this is the data that I took from this website. It says the latest data indicate that 39.6% of US adults are obese. It's 39.6%. Another 21% are overweight, and 7.7% are severely obese. But then it keeps on breaks it down further into the rates of obesity are higher for Black and Hispanic women, for Hispanic men in the South and Midwest, in the non-metropolitan counties, and tend to increase with age. And I think that's one reason why the incidence of heart disease is high in this country. So we move over to the second mantra over here. I don't want to go too much detail into the first mantra. The second mantra is Ya Adharaye Chak Manaye. Again, this is a long word, and I have broken this into 5 separate parts. Pitvo Annavan Rafitai Up Jagmushe. Sthiram Manha Karnute Sevate Puroto Chitsa Marditaram Na Vindate. ये सेकंड मंत्र है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 117. ऋषि द सेम भिक्षु and the devta is dhan an dan prashansa. That is the subject of this sukta. पदच्छेद करेंगे, then becomes a little bit more clear. यह आधराय चकमानाय पितवा अन्नवान सन रफिताय उप जगमुषे स्थिरम मन कुणते सेवते पुरा उत उ इति चित स मडितारम न विंदते. The Paksha you can find in the internet. So what is अनवान? अनवान we know अन वाला, जैसे बलवान होता है बल वाला. धनवान धन वाला, सेम प्रोसेस. अनवान मीन्स अन वाला. सन, सन मैंने होता हुआ, सन मैंने ये बनता है जो, if I can go into a different screen over here. This sun also you will find in the Vedas occurring quite a bit, and it is found. ये अस धातु से बनता है. अस प्लस इसमें प्रत्यय लगता है क्षत्रि. वी हैव डिस्कस दिस इन द क्लास. क्षत्रि प्रत्यय अस धातु. अस का मतलब है ना होना. अस भुवि, अस का मन होना. और क्षत्रि प्रत्यय लगता है इसमें. और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट सूक्त लगता है वो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. दिस इज द इंपॉर्टेंट सूक्त लगता है 64111. उससे इस जो जो फर्स्ट आर गेट्स इलाइडेड, डिसिपेट हो जाता है. तो इससे फिर इनका कॉम्बिनेशन गोज. वी हैव डन इन द क्लास हाउ क्षत्रि प्रत्यय बिहेव्स बिकम सन. इसका अर्थ होता है प्राप्त होते हुए. होते हुए, जस्ट जस्ट होते हुए. नॉट प्राप्त बट जस्ट होते हुए. That's the meaning of this. And sun pratyaya occurs many places in the Vedas. And so I thought maybe I will describe that. Adhraya. Adhraya means, I went to Nurup and I found that Adhra means Dridra. So Adhraya is the Chaturthi Vibhakti becomes Dridra ke liye. So the meaning of this few words is, and I will going to go other words also. जो अन्न वाला होता हुआ भी, अर्थात जो अन्न का स्वामी है उसके पास अन्न है, वह दरिद्र के लिए. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस 4 words.
And second, pitva. Pitva means un ko चक मानाए. चक मानाए इज चाहने वाले के लिए, अर्थात जो बहुत ही भूखा है, भूख से व्याकुल है, उसके लिए. And all of these will fit into when I'm just going for by word right now, but all of these when we make the complete sentence, then you will see what it really means. It becomes more clear. रफीताए. रफीताए जो है, जो हिंसित हैं, जो पीड़ित हैं, किसी रोग या एक्सीडेंट से पीड़ित हैं. Someone who is unable to work could be due to any disease, or someone who is physically and mentally challenged, whether at birth or due to some accident or disease. ऐसे व्यक्ति के लिए. And रफीताए is made from धातु रफ, जिसका मतलब होना दुख. दुख इसमें मैं अर्थ लिया है हिंसित, जो हिंसित, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं. And in the English language also we use the word rough, rough, you know. And so perhaps this word has gone from Sanskrit to the American language or the British language, rough. Just we use you have heard the word, this man was roughed up by the cops. बोल सुनते हैं, so same sense over here. उप जगमुशे. उप means समीप, समीप आते हुए को देखकर. जगमुशे is formed, गड़बड़ कर दिया यहाँ पर. Yeah. जगमुशे is formed from धातु गम, which मतलब जाना. तो इसमें समीप आते हुए को देखकर. उसके लिए मन, अपने मन को स्थिरम करनुते, स्थिर कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, ढीठ बना लेता है, कठोर बना लेता है. अर्थात वह न्याय देने का निश्चय ले चुका है कि ही इज नॉट गोइंग टू गिव एनी डोनेशन टू हिम और एनी चैरिटी और एनी फूड. He has already made up his mind that he has no intention of giving a food to such a person. और और उतना ही नहीं कि वह मन को दृढ़ करके वहां पर रुक जाए, बल्कि उसके सामने, पूरा पूरा मीन्स बिफोर, उसके सामने सेवते, फ्रॉम धातु सेव मीन्स सेवन करना, स्वयं खा लेता है, अपने लिए सेवन कर लेता है. वह भी सुख को देने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है. सो वो लास्ट लाइन इज बीइंग रिपीटेड इन दिस मंत्र, मडितारम मडितारम न विंदते. उसको भी वो भी ऐसे परमात्मा को प्राप्त, सुख देने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है. In English it will become a person who has plenty of food and does not share it with a poor person. दरिद्र, जिसको हमें बोला दरिद्र है, दाधराय, आधराय, सॉरी आधराय. A poor person who has a great desire to eat, but he has, because he's hungry, has been hungry for a while. With a person who is sick or injured or unable to work, and he not only decides not to share, but also eats at the same time in front of him, उसके सामने बैठकर खाता है. Such a person which never receive the blessing of God and will never achieve salvation in this world, which is the ultimate goal of human life. So this is where I end this talk right now. And I think most of my time when I studied these mantras goes into what these various words, how they are derived. That's where I spend my time, because of the knowledge we have been gaining from the Acharya Hari Prasad ji for the last 3 years. So we go from sevate, from किस धातु से बना है ये, कौन सा यहाँ पर प्रत्यय लग के आ रहा है. समर्डितारम, वही त्रिच प्रत्यय लग के आ रहा है मृड धातु से. And it is a long list because there are so many words over here जो उसमें आए हैं. चकमान का भी यहाँ पर आया हुआ है. So and some of them are really complicated. Sometimes I'm able to find help from the internet, but other times, I have to just struggle through it to find out how these words are formed. This one from sun, I was able to find from the internet how this word was formed from as dhatu. So it was a very good explanation this internet has given me from some website.
But anyway, thank you for listening. And that is my goal. When I present a mantra, I would like to know what the word really means, what it means. And if a person has any bhashakar has taken the word from a certain place, then I want to know, from where he has taken it. And so that gives me more confidence in explaining the meaning of the mantra. So my goal when I come here would be to explain what this mantra is meaning. After that, the explanation, etc. You can extend the explanation for 10 days if you want to. Go to different. इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा. That's not I want to do. But anyway, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ. आपको कोई प्रश्न है तो I will be glad to answer. I have one question. हाँ जी. आपके can I आपकी ठीक नहीं आ रही आवाज. ठीक आ रही है? हाँ आ रही. हाँ बोलिए जी. हाँ जी, my question is that in the beginning you said give to charity to that organization which you think who deserves it. Who are we to judge whether this organization deserves charity or not? Well, if you are giving to a charity and you find out later on that the money was misused or it was not used for the purpose that you want to send it, then you will repent. Why did I give the money to them? If it was misused. And if we never find out, it's okay. It's not okay, but that's what they're saying. It is you have to really you have to go to the internet or you have to find from friends, how this money is being used. There are people. There's an organization here called Narayan Seva Center. I don't know if you heard of. They provide free limbs to the people in India. Do free surgeries. Their center is in Udaipur. So one of the persons who is a big sponsor from our area, he went there. He spent time over there for at least a week. He spent and he saw how the poor people were coming in and they were not being charged and they were given free surgery for installing these limbs over there. So I will feel confident in giving to this organization, and they organize in our area. Every year they organize a women's cricket match over here, competition sort of thing. It's a fun gathering, and then they collect money at that time. And so you can find out like that. That's the way I feel comforted there. That's the way I would go. But you cannot really go into every organization and see how the money is being used. But you can always demand. Show me your financial statements. Where are those? If they are hesitant in giving the financial statement, you know there's a fishy something. Can we do it for Salvation Army and Goodwill? You have to find out. You have to find out from them how much money is really being given to the people, and how much money is being spent on the paying the salary of the employees and all that stuff. And if you feel comfortable, some of my money is finding there. If the majority is being used for the paying the salaries and other purposes, then I would not want to give them. But I don't know. I really haven't done any research. There is a national organization called Charity. I can get you the exact thing you want. It gives you information. You can get it on the internet too. Generally, Salvation Army has been a relatively good organization. Goodwill Industry, I don't know enough about. So the overhead is very small. I think they go by overhead. How much is overhead versus how much goes to the recipient? So these are good. I think it depends on what you want out of your money. Like I'm using our own Arya Samaj. If you gave, for example, our Prati Sabha, the more money they have, the more person they can bring. Who Askaradi. I'm using an example. So I think some organizations you already know where money is being spent. You have direct information. But if you want to give in bigger ways to, as I said, Salvation Army, Goodwill, and all these, there's data available all over. And there is this organization which actually ranks charities, how much goes for overhead versus not. Some organizations eat up 80% on overhead, 20%, and some go even 5%.
the recipient 95% eaten up in the process. Yeah. But that's not true for Goodwill or Salvation Army. Yeah, that you have to watch out. If the overhead is 80% or 90%, then I know. yeah. You often don't find that out, but I think this organization ranks them, and Yeah. the best they have information they tell you. But it's called charity.com. It's a different name. I'll give you tomorrow or on Wednesday. All Okay. right. Okay. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. No, it's a very good question you asked, Well, anyway, any other questions or comments you might have? No? No, you give great talks. They're very hard work you do. I think most of us are not capable of doing that, I think, but you do a great job explaining that. I want you to know. It's Yeah, thank really you. good. You I break mean, up the just word the and knowledge explain to it. what you're doing. Yeah, thank you very much. No, this is for my own satisfaction. I mean, if I don't give a talk, it's not only I'm doing it for this purpose. No, we know that, but that's always true when you do the work yourself. But Yeah. still, it's a lot of work you do to give proper context and meaning really this way, I think. Yeah, okay. Thank you very much. So we will do Shanti part now, and there are no further. No, today is Ramayana. Today that will be coming from Vedic temple in Atlanta at 8 p.m. Eastern time. Just a reminder, those who will wish to attend. So we do Shanti part. Om Dev Shanti Rantariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shantiroshadhayah Shanti Vanaspatayah Shantirvishve Devah Shantirbrahm Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Shanti शांति शांति सबका सादर नमस्ते सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नमस्ते धन्यवाद सबका नमस्ते I will close the session now. So I will see you tomorrow at 6 p.m. Dr. Sudhir Nanji will be here for the pravachan.